Now see this question. Limit x tends to 2, 5 raised to x, 5 raised to 3 minus x minus 30 upon 5 raised to 3 minus x, 5 raised to x upon 2. अगेन जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें अगर मैं लिमिटिंग वैल्यू x की 2 सब्स्टिट्यूट करूं तो न्यूमरेटर 5 स्क्वायर प्लस 5 रेज टू 3 माइनस 2 माइनस 30 का टोटल हो जाएगा 0 एंड डिनोमिनेटर ऑल्सो विल बिकम 0. नाउ ऐसे सिचुएशन में हम एल हॉस्पिटल रूल फॉलो करते हैं, यानी लिमिट x टेंड्स टू 2. सबसे पहले न्यूमरेटर का डेरिवेटिव निकालो. 5 रेज टू x की डेरिवेटिव 5 raised to x log 5 plus 5 raised to 3 minus x का डेरिवेटिव 5 raised to 3 minus x log 5. 3 minus x कंपोजिट पार्ट है, उसकी डेरिवेटिव आएगी -1. 30 का डेरिवेटिव 0 कांस्टेंट है अपॉन 5 raised to 3 minus x की डेरिवेटिव 5 raised to 3 minus x log 5. कंपोजिट पार्ट 3 माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1. 5 रेज टू एक्स अपॉन 2 की डेरिवेटिव 5 रेज टू एक्स बाई 2 log 5 एंड कंपोजिट पार्ट x बाई 2 का डेरिवेटिव हाफ. विल गेट लिमिट x टेंड्स टू 2, 5 रेज टू x माइनस 5 रेज टू 3 minus x upon minus of 5 raised to 3 minus x minus half 5 raised to x upon 2. So common part log 5 हमने कैंसिल कर दिया. अब जैसा कि आप देख सकते हो, लिमिटिंग वैल्यू अगर 2 हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर नॉन जीरो. So we simplify the limit by substituting the value. तो लिमिटिंग वैल्यू x की वैल्यू 2 पुट कीजिए हर जगह. तो 5 स्क्वायर माइनस 5 रेज टू 3 माइनस 2 अपॉन माइनस 5 रेज टू 3 माइनस 2 हाफ 5 रेज टू 2 बाय 2. दैट इज इक्वल टू 5 स्क्वायर 25. 5 raised to 3 minus 2 is 5 raised to 1, that is 5. Same over here, minus 5 minus 5 raised to 2 by 2. 5 raised to 1 is 5 and into half is 5 by 2. Simplify करिए. 25 minus 5 you will get 20 and minus 5 by 2 is minus 15 upon 2. That means you are getting minus of 20 into 2 upon 15. जैसा कि आप देख सकते हो 5 का फैक्टर कॉमन है. 5 4s are 5 3s are. So finally the answer that you get is minus 4 into 2 is minus 8 upon 3. That means option C is correct answer for you.